Hello, my dear student. Hello, guys. Welcome to everyone. I want to tell you in the previous lecture I have told you modulus function and half part of the greatest integer function. Once again, I want to tell you greatest integer, and after that I will tell you smallest integer fractional part function. Okay, let us start. What is the greatest integer function? Greatest integer function. Let us suppose that, and here let x be a real number. The symbol, this denote the greatest integer less than or equal to x. And that is, what is the meaning of that here? Yani this symbol denote the less than or equal to x. Example, and the value of the 2.3 is equal to 2. 2.6 is equal to 2. 2.8 is equal to 2. 3.8 is equal to 3. Yani you are looking here, 2 is less than, and 2 is the integral value of this, and 2 is the integral value less than or equal, less than 2.3. Less than 2.3, and here is the 2 is integral value less than 2.6, and here the 2 is the integral value of this less than 2.8. Here is the this value of this will be the integral value, not in fraction. Okay, so that's why once again I want to tell you. Here is the, suppose that 5.6 is here. This is equal to 5. And 5, this is the integral value, and this is less than 5.6. I hope that you are getting my point. Okay, you got my point. Now 6.7 is equal to 6. आप देख रहे होगे, यानी हमेशा इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकल के आएगी और हमेशा क्या होगी, इससे छोटी होगी. यानी 6.7 से छोटा इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 6 होगा. What is the integral value less than 5.6? 5. What is the integral value less than 3.8? 3. Less than, integral value less than 2.8 is 2. Okay, and always will be less than or equal to that. Suppose that here the 6, then here the 6, here the 5. This is the integral value. Okay, but when we are taking negative fractional value, any real numbers. Suppose that 3 minus 3.2. This means integral value less than minus 3.2, it will be minus 4. Here the 6.7. This means integral value less than minus 6.7 is minus 7. Okay, I hope that you got my point. Okay, so that's why we can define integral, the greatest integer function. Okay, now definition. Let us suppose that a function f from R to R is defined by f of x is equal to, using this symbol, square bracket of x, this for all x is element of R. Domain of f, all the real values, and range of f means all the integral values. You are getting, I have written here,
यानी इंटीग्रल वैल्यू, वी आर गेटिंग इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस, यानी सेट ऑफ इंटीजर, set of integer. Okay, it is the set of integer. Now codomain of f is equal to this r. Okay, now let us start graph of the greatest integer function. I am going to tell you how we can represent graph. Okay, here is the x x o x dash y o y dash. Okay, let us suppose that here the 0, here the 1, this is the 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Here the 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay, here the x, here the greatest integer function, yani using this symbol, if x is belonging to, हम कह सकते हैं, यानी here the x belonging to -1 2, सीधे हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं ना, यानी if x is x is less than 1 and greater than or equal to 0. Okay, and also we are taking negative value, x is less than 0 and greater than equal to -1. Here the x is less than -1, greater than equal to -2. Here the x is less than 2, less than 2, -2 and greater than equal to -3. And here is the x is less than 2, greater than equal to 1, x is less than 3 and greater than equal to 2, and also here is the x is less than 4 and greater than equal to 3. Then here 0 to 1, and when x lying between 0 and 1, not including 1. So that in this case greatest integer of x, यानी x की वैल्यू क्या होगी इसमें, यानी 0, it becomes 0, है ना, यानी it means 0.1 की वैल्यू हम लेते हैं, यानी 0 और 1 के बीच में क्या होगा, यानी here is the 0 is equal to 0 हो जाएगा, and here becomes 0.2 is equal to 0, 0.3 is equal to 0. Okay, तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 0, it becomes, and here becomes less value, we will take the less value, here the 1, here the 2, here it becomes 3, here becomes -1, here becomes -2, here becomes -3. Okay, always we shall take the less than x value of this, and integral value I have written here. Now we shall plot the graph. It means when x equal to, यानी here the x is equal to line between 0 and 1, यानी x की value we are looking when the value of x
vary from 0 to 1, not including 1, not including 1. So value of y is 0, यानी यहाँ पे आपका 0 और 1 के बीच में y कर रहा, तो 0 और 1 के बीच में तो y को क्या है, यहाँ से 10 का मस ऊपर नहीं, ये ऊपर ना वाले तो नीचे यहाँ वाले पे रह जा रहा है। जब आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, यानी 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है x की वैल्यू, तब कितनी हो रही है वैल्यू, यानी यहाँ पे जा रही है ऐसे यहाँ तक, यानी 1 सीधे आ रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या मिलेगा, जब यहाँ से करेंगे 1, 1.2, 1.3 तब y की वैल्यू 1 ही मिल रही है, 1.3 करेंगे, 1.4 करेंगे, 1.6, 1.7, 1.8, 1.99, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1 ही आ रही है, यानी हमारे पास क्या मिलेगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन नॉट इंक्लूडिंग 2, यानी हियर द एट 1 is equal to 1 है यहाँ पे, यानी एट 2 is equal to नहीं होगा, यहाँ पे 2 पे नहीं है, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, हमारे पास सेम 2 और 3 की बीच में एक when value of x lying between 2 and 3, then the value of y is 2, यानी in front of this here आपको कुछ ग्राफ ऐसे मिलते जाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर आपको इनकी 3 और 4 के बीच में इसकी लेस वैल्यू 3 है तो यहाँ पे मिलेंगे कुछ ऐसे, फिर 4 और 5 आएगा, फिर इसमें लेस में जाएंगे 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 एंड -1 एंड 0 के बीच में लाई कर रहा है, -1 वैल्यू है तो y की वैल्यू -1 हो गई, यहाँ से 0 और 1 के बीच में ऐसे कुछ आएगा, यहाँ से यहाँ तक है ना, कुछ ऐसे 0 मिलेगा, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मिलेगा आपका कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी और 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3 आ जाएगी, कुछ आपका ग्राफ ऐसे ही बनता जाएगा। मींस क्या कुछ समझना होगा ये विषय में, यानी इस तरह बनाने का मतलब क्या है, इस तरह का बनाने का मतलब 2 इज नॉट इंक्लूडिंग, यानी जब यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 लेंगे सीधे सीधे, अब यहाँ पे कर रहा है 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, जैसे हम यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, 1.2 की वैल्यू क्या हो गई 1, 1.3 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1। ठीक है, तो हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.99 जाएंगे तो उस केस में वैल्यू आपकी y कितनी आएगी, 1 ही रह जाएगा, पॉइंट जितने भी होंगे। जैसे हम 2 पे भागेंगे तो 2 पे 2 तक यहाँ तक जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आपको ग्राफ मिलता जाएगा, फिर यहाँ पे आप जाओगे फिर आपको ग्राफ ऐसे मिलता जाएगा, है ना। तो अप्लाई द सेम प्रोसेस, हियर इज द okay. Now this is the graph of the greatest integer function. After that I am going to tell you smallest integer function, applying the same process. यानी what is smallest integer, let us suppose that x be any real number, then the symbol this denote the greatest integer less than or greater than or equal to x. Let us suppose that x be a real number, then the symbol this to denote smallest integer greater than or equal to x. Okay, any example,
find 3, यानी we shall take the integral value greater than to find 3. Here becomes 3. To find 6 here then here becomes 3. यानी integral value just greater than to find 6 is 3. यहाँ पे इसका मतलब टर्म है, सीधे सीधे आप इसका थोड़ा अपोजिट सोचना, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे होगी. Here the 3.6, here the 4, here the 6.7, it becomes 7. 8.9, it becomes 9. Okay. Here the 10.3, then here becomes, sorry, ये सिंबल आपका मैं गलत लगा दिया हूँ, ऐसे होगा, आदत है थोड़ा सा हो गया है. Okay. Here the 10.3 becomes 11. Okay. And taking negative decimal number, यानी here becomes minus 2.3. It becomes minus 2. Because we know that greatest integral value of the, and this means any greater integral value of 2 minus 2.3, तो क्या होगा यहाँ minus 2, and also 6.7, and just greater integral value of the minus 6.7, it becomes minus 6. Okay. 6 minus 8.9, here comes minus 8. Okay. Now then the function here such that from R to R is defined by f of x is equal to this. For all x is element of R is called greatest, sorry, is called smallest integer function. Okay. Now how we can plot the graph of the smallest integer function? Apply the same process as for the greatest integer function. X to x dash, y to y dash, यानी when x belonging to 0 and 1, यानी it means x is greater than 0 and less than equal to 1. So then in this case value of f of this is equal to क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आपका मिलेगा 1, है ना. मैं आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ, यानी इसका मतलब क्या है, यानी 0 यानी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी इक्वल टू साइन यहाँ पे है, यानी 1 इंक्लूडिंग. तो then in this case what is the greatest value of this x is 1. So we shall take यानी value of this equal to 1. Okay. Now here the x, here the, then x is equal to minus 2 x is
here becomes minus 1, here becomes 0, here becomes x 0 और 1 के बीच में 1 हो जाएगा x, here becomes 2, here becomes x, here becomes 3. Okay, here is the 1 2 3 4, 1 2 3 4, here the minus 1 minus 2 minus 3 minus 4, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. Okay, hello guys, be careful, look at here carefully. Now here in this means when the value of x is greater than x, value of x is greater than 0 and less than equal to 1, यानी 0 is not including, 0 is not including, it means ऐसे लगाएंगे सिंबल कुछ ऐसे, यानी इंक्लूड नहीं कर रहा, like this. Then value of, यानी when the value of x is greater than 0 and less than equal to 1, then y value of y is 1, यानी 1 की सिधाई में हम करेंगे, यानी जो स्टेटमेंट हम ड्रा करेंगे 1 की सिधाई, यानी y की क्या रही 1, तो यह 0 पे इंक्लूड नहीं है, यानी ऐसे और यहाँ पे सीधे उसका उल्टा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है। इसी तरह से 1 और 2 की बात करेंगे तो सीधे 2 की सिधाई में आपको मिलेगा कुछ ऐसे ग्राफ मिलेंगे, है ना। सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, फिर यहाँ पे आपका आएगा जब नेगेटिव नंबर लेंगे, फिर आपको यहाँ मिल जाएगा x1। बेटा यहाँ देख सकते हो, मैं आपको फिर से समझा दूँ, जब x की वैल्यू -1 से 0, -1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी 0 से क्या है, यानी छोटा है, -1 तक जाएगा तो y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 0 आ रही है, यानी 0 की ही सिधाई में y x यहाँ 0 की सिधाई में ड्रॉ करेंगे। when value of x is greater than -2 and less than equal to -1, यानी जब 2 -2 और 1 की बीच में कर रही है तो y की वैल्यू -1 आ रहा है, -1 की सिधाई में हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ -2 इंक्लूड नहीं है, आप देखो तो माइनस जहाँ इंक्लूड नहीं है वहाँ पे आपको हालो सेमी सर्कुलर ड्रा कर दो, इधर पूर्ण कर दो, यहाँ डार्क करना है यहाँ, तो सिमिलरली लाइक दिस एंड आल्सो लाइक दिस। Okay, now and other fractional part function, how many important function are left, यानी this means fractional part function, second is the exponential function, third is the logarithmic function. These are very very important function, and this function I will tell you in the next lecture. Okay, that's all.